We need to draft a new constitution of India. Yes, I firmly believe so many nations, wherever they felt it is necessary, they have rewritten their constitutions. Yes, they have brought in new constitutions. Now there is a need in this country to pursue a new constitution of India. Telangana CM Chandrasekhar Rao has given a proposal for a new constitution in India. That has been in the news of late for a couple of days now. From Ambedkarite Party of India, I would like to differ, and I would like to categorically state that the Indian Constitution requires major amendments. That is my view, that is our view. And I myself has given 16 bills to the Parliament. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वे संविधान को फिर से लिखने की मुहिम चलाएंगे। हमें भारत में एक नया संविधान का मसौदा तैयार करने की जरूरत है। उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान भी तेज हो गया है। तमाम विपक्षी दलों ने उनके ऊपर जमकर हमला बोला है, लेकिन इन सब से हटकर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने तेलंगाना के सीएम को करारा और सटीक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के चंद्रशेखर राव के इस बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, लेकिन संविधान में मेजर संशोधन की जरूरत है और उसका विस्तार भी होना चाहिए। यह बात उन्होंने अपने ऑफिशियल बयान में कही है। उनका कहना है कि मैंने स्वयं संसद को 16 बिल बना कर दिए हैं। उसमें 10 बिल पूर्णतः चुनावी सुधार के हैं तो 2 बिल भारत के संविधान में ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट करने के हैं। 2 बिल आदिवासियों के अधिकारों को इनकॉर्पोरेट करने के हैं और अन्य बिल आरक्षण का विस्तार करने के हैं। इस तरह कुल 16 बिल उनके द्वारा संसद को दिए गए हैं। उन्होंने चंद्रशेखर राव से कहा है कि संविधान हमारा अच्छा है लेकिन परिपूर्ण नहीं है। यह बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, लेकिन भारत को एक नए संविधान की जरूरत भी नहीं है, केवल उसमें मेजर संशोधन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने राव से कहा है कि संविधान में संशोधन को लेकर उनके जो विचार है उसे लेकर चर्चा भी कर सकते हैं और उसका प्रारूप भी तैयार करके रख सकते हैं। उसके ऊपर वैलिड रिस्पॉन्स देने का मजा कुछ और रहेगा। उन्होंने अंत में यह भी कहा है कि जुडिशियल रिफॉर्म को लाने की भी जरूरत है, साथ में फेडरलिज्म को ठीक करने की भी संविधान में जरूरत है। इसके अलावा पार्लियामेंट के नियमों को भी अलग से संशोधित करने की जरूरत है। साथ में नया एजेंडा भी हो सकता है, लेकिन नया संविधान बनाने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है। विजय मानकर ने यह बयान हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में जारी किया है। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का वो बयान जिसमें उन्होंने नए संविधान की बात की है। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे विजय मानकर का हिंदी और इंग्लिश में दिया गया बयान। चेंज इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, रिमूवल ऑफ बीजेपी। मैं आपको एक बात बोलूं, shall I tell you one thing? Nothing will change in this present setup. And that's why hear me, don't be impatient. We need to draft a new constitution of India. Yes, I firmly believe so many nations, wherever they felt it is necessary, they have rewritten their constitutions. Yes, they have brought in new constitutions. Now there is a need in this country to pursue a new constitution of India. एक नया सोच, एक नया दिशा, नया संविधान, यही हमारा नारा होगा। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव जी ने नए संविधान बनाने की बात की। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इससे सहमत नहीं। नए तरह के संविधान बनाने की आवश्यकता आज भारत में नहीं है। हाँ, संविधान में अमेंडमेंट्स होने चाहिए, मेजर अमेंडमेंट्स होने चाहिए और उसका विस्तार होना चाहिए। इस व्यू की अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है। और मैंने स्वयं, आप सब जानते हैं कि मैंने स्वयं संसद को 16 बिल्स बनाकर दिए हैं और ये जो 16 बिल्स जो संसद को मैंने बनाकर दिए हैं उसमें 10 बिल्स टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल्स हैं। 2 बिल्स भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट करने के बिल्स हैं। 2 बिल्स इंडिजिनियस राइट्स के, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनका जो है वो राइट्स को इनकॉर्पोरेट करने के बिल्स हैं और 2 बिल्स जो है वो रिजर्वेशन को एक्सपांड करने के बिल्स हैं। इस तरह के 16 बिल्स जो है मैंने स्वयं संसद को बनाकर दिए। आई हैव ड्राफ्टेड द बिल्स एंड आई प्रेजेंटेड देम टू द पार्लियामेंट। तो संविधान में कई अमेंडमेंट्स की जरूरत है क्योंकि संविधान हमारा अच्छा है,
लेकिन परिपूर्ण नहीं, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं। उसमें कई तरह की वीकनेसेस है, उसमें जो है पॉजिटिव अमेंडमेंट्स की जरूरत है, एक्सपांशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, लेकिन एकदम से नया संविधान बनाने की जरूरत आज नहीं है। ये मैं चंद्रशेखर राव जी से कहना चाहूंगा। आपके जो भी आइडियाज है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को लेकर, अगर आप चाहें तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और उसका ड्राफ्ट जो है वो आप बनाकर तैयार रखें प्रारूप, ताकि उसके ऊपर ज्यादा वैलिड रिस्पांस देने का जो है वो जो है वो मजा रहेगा या ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन नए संविधान बनाने की जरूरत अभी भारत में नहीं है। हाँ, संविधान में मेजर अमेंडमेंट्स की आवश्यकता है, ये बात मैं एनलिस्ट करना चाहूंगा। कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता है, इंडिजिनियस राइट्स को इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता है, रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शंस को और एक्सपांड करने की आवश्यकता है, जुडिशियल रिफॉर्म्स को जो है वो लाने की जो है वो आवश्यकता है, फेडरलिज्म की कुछ प्रोविजंस को ठीक करने की जरूरत है, और पार्लियामेंट के रूल्स को अलग से जो है वो अमेंड करने की जरूरत है। और इसके अलावा भी कुछ एजेंडाज हो सकते हैं, जैसे बजट को लेकर जो है, इकोनॉमिक्स को लेकर कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में लाए जा सकते हैं। इन तमाम चीजों की जो है वो आवश्यकता है और इसके लिए मेजर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। नए संविधान बनाने की अभी जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर राव हैज गिवन अ प्रपोजल फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया that has been in the news of late for a couple of days now. From Ambedkarite Party of India, I would like to differ, and I would like to categorically state that the Indian Constitution requires major amendments. That is my view. That is our view. And I myself has given 16 bills to the Parliament, and these 16 bills to the Parliament, what I have presented to the Parliament. The 10 bills are on comprehensive electoral reforms. 2 bills are to incorporate human rights into the Constitution of India. 2 bills are to incorporate the indigenous rights of the aboriginal scheduled tribes in the Constitution of India. And 2 bills to expand the reservation in the Constitution and affirmative actions, for expansion of reservation and affirmative actions. So 16 bills in all I have presented to the Parliament. I have myself drafted these bills after exhaustive research, and I presented it to the Parliament. So API is of this view, I am of this view that the Indian Constitution is good, but it is having certain weaknesses. I acknowledge this, that you see it is having major weaknesses, and therefore it will require major amendments, but positive amendments to expand the Constitution. But at present there is no need to go for a new Constitution in India. Anyhow, if Chandrasekhar Rao ji is having some ideas or drafts, he is always welcome, and he can share that draft and those ideas with me, and I'll be discussing in detail why you see a new constitution at present is not required. On the contrary, why you see positive amendments to the constitution will make India much better. And I will always be open for a very sound and a very academic and a very intellectual and a very republic interaction with Chandrasekhar Rao ji. But he should come with his ideas clearly on the paper, and he's always welcome to have a discussion with me, and I'll always be open to have a very, very, very candid discussion with him. So at last, once again, I'm reiterating that Indian Constitution requires major positive amendments, but there is no need to go for a new constitution at present. I know that certain major amendments are required, just like comprehensive electoral reforms, comprehensive judicial reforms, to incorporate the human rights and the indigenous rights in the Constitution, to go for expansion of reservation and affirmative actions, to go for certain economical principles that should be there in the Constitution while drafting the budget, to get the federalism measures much corrective, and apart from that to incorporate the digital life world, the fourth industrial revolution that is taking place in India, that should also be accounted as far as the constitution is concerned, because the digital life world is coming, and our constitution was framed when technology was not so much advanced. At that period of time, the world was in second industrial revolution, while we are into the fourth industrial revolution, and perhaps in another 2 or 3 decades we'll be seeing the fifth industrial revolution as well. So, and apart from
these major amendments, we also require to separately amend the rules of the to the rules of the parliament and the rules of the legislative assemblies subsequently. So there is no need to go for a new constitution right now, but very positive and major amendments in the constitution are required. I am of this view, and I'll always welcome Chandrasekhar Rao ji to come out with his draft proposals, and I'm open for a very fair interaction with him. Thanks a lot.